Assalamu alaikum dear viewers. I welcome you all and thank you very much for all the likes and comments. And some students have asked for some other classes of some other topics as well, and we have decided to upload those classes side by side as well, and you'll get all those classes in the days to come inshallah. And today's topic is lysosomes. So lysosomes जो है ये membrane bound cell organelles होते हैं. membrane bound cell organelles. That means कि ये जो lysosomes है ये membrane bound होते हैं, इनके around जो है एक membrane होती है. ओके, सो एंड ये lysosomes जो है ये हमारी सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. Okay, and if we see the name lysosomes, this lysosomes जो है ये दो words से actually बना हुआ है. Lyso means lysis and lysis means breakdown. Okay, and somes is derived from the word soma and soma means body. Fine, and so ये जो lysosomes है, so we can define them as these are the bodies which are involved in the breakdown of something. ओके, हमारी सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये लाइसोसोम्स जो है ये हमारी सेल के अंदर किसी चीज का ब्रेक डाउन करते हैं, किसी चीज को तोड़ते हैं. ओके, और ये किस चीज का ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे करते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन अ व्हाइल इंशाल्लाह. Fine. So lysosomes are the membrane-bound cell organelles, or lysosomes जो है these are the bodies which are involved in the breakdown of something. Fine. If you remember our last class, जब हमने कहा था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वहां से प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, वहां से प्रोटीन्स बनते हैं और वो सारी चीजें फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम टू गोल्गी apparatus. और गोल्गी apparatus जो है वो इन सारी चीजों का प्रोसेसिंग करता है, इन सारी चीजों को मॉडिफाई करता है, इन सारी चीजों को जो है सॉर्टिंग करता है इन सारी चीजों की, एंड फाइनली वो जो सारी चीजें हैं वेसिकल्स में पैक किए जाते हैं और वेसिकल्स में पैक करके इनको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाता है. ओके, और उसमें हमने देखा था कि कुछ वेसिकल्स जो है वो इन गोल्गी apparatus से बाहर निकलते हैं और ये वेसिकल्स जो है दे कंटेन एंजाइम्स और ये वेसिकल्स जो है ये फिर फाइनली लाइसोसोम्स बन जाते हैं. ओके, तो we can say that these lysosomes, these membrane-bound cell organelles, which are very important inside our cell, they are formed from the Golgi apparatus. ओके, ये गोल्गी apparatus से जो है ये lysosomes बनते हैं. फाइन, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ lysosomes which are present in our cell. Okay, or which can be present in our cell, and two types of lysosomes are, the first one is primary lysosome and the second one is secondary lysosome. Fine, as I have told you that these lysosomes which are membrane bound cell organelles, they have the enzymes inside. Right? And before I discuss the types of lysosomes, I must tell that these enzymes which are present inside the lysosomes, these enzymes are hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes, enzymes जो इनके अंदर present होते हैं, these enzymes has to do the process of breakdown.
ओके जो हमारे नाम से ही पता मैंने आपको बता दिया कि लाइसो मींस लाइसिस, दैट इज ब्रेक डाउन। जो ये ब्रेक डाउन होता है जो लाइसोसोम्स करते हैं सेल के अंदर, ये ब्रेक डाउन एक्चुअली एंजाइम्स करते हैं जो इस लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके एंड द लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ओके एज द नेम इंडिकेट्स दीज एंजाइम्स जो है जो ब्रेक डाउन करते हैं किसी चीज का इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दोज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। एंजाइम्स which are doing the lysis, which are doing the breakdown in the presence of water, hydro. Fine. So these lysosomes contain the enzymes which are called as hydrolytic enzymes. Fine. Now these enzymes are present inside the lysosomes, and these lysosomes are of two types, primary and secondary. Fine. Enzymes will be present in both the types of these lysosomes, primary as well as the secondary. But what is the difference is, in the primary lysosomes these enzymes are inactive. Okay, when the enzymes inside the lysosome will be inactive, they will not be active and they will not be in the position to do the breakdown or to do the lysis. Fine. So these enzymes, when they are inactive inside the lysosome, then that type of lysosome is called as primary lysosome. And this primary lysosome में जब ये enzymes active हो जाते हैं and they are ready to do the breakdown and they are ready for the breakdown, तो ये प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर जब ये एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, देन दैट टाइप ऑफ lysosome is called as secondary lysosome. That means the enzymes inside are now active. Fine. So lysosome is of two types. One is primary lysosome, when the enzymes are not active inside the lysosome, that is called as primary. And when these enzymes become active, how they become active, that we will discuss in a while. And when these enzymes become active inside the lysosome, then that type of lysosome is called as secondary lysosome. Fine. Now, we'll discuss about the functions of lysosome. Okay, functions जो है, as I have told you that this lysosome जो है, they are involved in the breakdown of something inside the cell. Okay, so these lysosomes जो है, lysosomes are also called as garbage system. Garbage system or digestive system of the cell. फाइन. जो भी चीजें इस सेल को डाइजेस्ट करनी होती है, डाइजेस्ट मीन्स द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, जिस किसी चीज का भी ब्रेक डाउन करना होता है, वो ब्रेक डाउन जो है सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली करता है जिसका नाम लाइसोसोम्स होता है. ओके, सो द फंक्शन इज द ब्रेक डाउन, क्योंकि मैंने आपको नाम में ही बता दिया, लाइसोसोम्स द बॉडीज विच आर इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन. फाइन. सो द फंक्शंस आर it is involved in the breakdown of various substances. Fine. And that breakdown, I have told you, is done by various enzymes which are present inside the lysosomes. जो lysosomes के अंदर ये enzymes present होते हैं, वही enzymes जो है इन सारी चीजों का breakdown करते हैं. Okay, and let's have a look on some important enzymes which are present in the lysosomes. Fine. So functions जो है, functions is the breakdown of certain things. फाइन. ये हमारी सेल के अंदर जो है कुछ चीजों को डाइजेस्ट करता है, और वो डाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो डाइजेशन का प्रोसेस इज डन बाय द एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द लाइसोसोम्स. हाँ.
So some important enzymes which are present in the lysosomes are, the first one is amylase. ओके एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइन, कार्बोहाइड्रेट्स, इट ब्रेक्स डाउन द पॉलीसेक्राइड्स इनटू द ग्लूकोज, फाइन, सो दैट इज द एमाइलेज. देन देयर इज प्रोटीएज. प्रोटीएज जो है ये प्रोटीन्स को जो है ब्रेक डाउन करता है. इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू द अमीनो एसिड्स. ओके, द थर्ड इंपॉर्टेंट एंजाइम इज लाइपेज. ओके, एंड लाइपेज जो है इट ब्रेक्स डाउन द लिपिड्स. Okay, it breaks down the lipids into the fatty acids. Fine. So the important enzymes which are present inside the lysosome, they are the amylase, then there is protease, then there is lipase, then there is nuclease, and many other enzymes which are present there in the lysosomes. Fine. And now we'll see the mechanism of action of the lysosomes. How these lysosomes are involved in the process of breakdown, in the process of digestion. Mechanism. Fine. Mechanism जो है, there can be two mechanisms जिनकी जो है, जिन mechanisms से जो ये lysosomes होते हैं ये functions perform करते हैं. Okay, the two mechanisms are, the first one is called as autophagy. Okay, autophagy, as the name indicates, auto means self and phagy means death or eating. Fine. जब ये लाइसोसोम्स जो है कुछ ऐसी चीजों को जो है डाइजेस्ट करता है, कुछ ऐसी चीजों का ब्रेक डाउन करता है जो सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज ऑटोफेजी. Okay, and if the lysosomes are degrading or digesting or breaking down something which has been brought from outside the cell, जो सेल के बाहर से कोई चीज आके सेल के अंदर जिसको डाइजेस्ट किया जाता है by the lysosomes, that process is called as heterophagy. Fine. So there can be two mechanisms of actions of lysosomes. Lysosomes जो है दो तरीकों से अपना काम करता है. एक होता है ऑटोफेजी, जब ये लाइसोसोम्स उन चीजों को डिग्रेड करता है, उन चीजों को डाइजेस्ट करता है, उन चीजों का ब्रेक डाउन करता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और जब ये लाइसोसोम्स उन चीजों का डिग्रेडेशन करता है जो सेल के बाहर से लाए जाते हैं या आते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेटेरोफेजी. फाइन. Now we'll see some specific functions of lysosomes. The function is actually the degradation. Okay? The function is breaking down, function is digestion. Okay? चीजों का जो है ब्रेक डाउन करना, चीजों को डाइजेस्ट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स. लेकिन किन चीजों का ये डाइजेशन करता है और कैसे करता है, दैट विल डिस्कस इन द स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स. एंड द फर्स्ट फंक्शन इज द डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. Macromolecules. Okay, the degradation of macromolecules, the larger molecules का जब degradation करता है, होता है सेल के अंदर, that degradation is done by the lysosomes. Okay, for example, this is the cell.
ओके और सेल के अंदर जो है कोई बैक्टीरिया जो है सेल पे अटैक करना चाहता है. ओके दैट बैक्टीरिया रीच हियर नियर द सेल और ये सेल जो है फॉर एग्जाम्पल दिस इज बैक्टीरिया और ये सेल क्या करेगा इट engulfs दिस बैक्टीरिया एंड व्हाट हैपन्स इज लाइक दिस. ओके और ये बैक्टीरिया जो है इसको ये सेल एनगल्फ करती है और लेट मी टेल यू बिफोर दैट कि जो सेल के बाहर से चीजें अंदर लाई जाती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस. Endocytosis, the process of bringing something from outside to inside the cell. ओके जब बाहर से किसी चीज को सेल के अंदर लाया जाता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस एंड जब किसी चीज को सेल के अंदर से बाहर भेजा जाता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस. ओके नाउ दिस एंडोसाइटोसिस कैन हैपन इन सेवरल वेज. ओके सेल के बाहर से बहुत सारे तरीकों से जो है सेल के अंदर चीजों को लाया जाता है. Okay, the first one is phagocytosis. Phagocytosis. Okay, phagocytosis means cell eating. Cell eating. सेल ईटिंग जैसे हम कुछ खाते हैं तो वैसे ही जो है सेल भी कुछ चीजों को खाती है दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस. और ये खाना कैसे होता है सेल का ये सेल जो है ये एनगल्फ करती है उस चीज को जिसको सेल के अंदर लाया जाता है. ओके और ये एनगल्फिंग मतलब उसको अपनी लपेट में लेना जिस चीज को हमें सेल के अंदर लाना है उस चीज को अपनी लपेट में लाना इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस. ओके और जब ये फैगोसाइटोसिस के जरिए जब इस चीज को जब इस मैक्रोमोलिक्यूल को फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया इसको अंदर लाया जाता है देन इट बिकम्स अ वैक्यूल हियर. फाइन इट बिकम्स अ वैक्यूल एंड इट हैज बैक्टीरिया इनसाइड. फाइन जब ये सेल के अंदर लाया जाता है एंड दिस वैक्यूल इज कॉल्ड एज phagosome. Phagosome, the body which is inside the cell or the vacuole which is inside the cell after the process of phagocytosis. Okay? Then, if there are droplets, small droplets, for example, the nutrients, okay? The droplets are, इनको भी हमें अंदर लाना है. Okay? It is same like we are drinking. Fine. So that process जिनको इन droplets को जब ये this is macromolecule that is called as cell eating which is called as phagocytosis and the second type of this endocytosis is pinocytosis. Pinocytosis. Okay, pinocytosis is called as cell drinking. Okay, so what is the difference between phagocytosis and pinocytosis? It is simply phagocytosis is cell eating when the solid particles are brought inside the cell, okay, by the process of the engulfing or the process of phagocytosis. Okay, but when these droplets or particles are brought inside, जो है these are not the solid particles and this process is done जब ये सेल जो है ये invaginate करेगी. Okay, it is something like this and the droplets will come here. Fine, and finally these droplets will come inside and they will also be in a form of a vacuole. Okay, and this process is called as cell drinking or this process is called as pinocytosis.
Okay, this process is called as phagocytosis. Phagocytosis is the cell eating, and then the second type of endocytosis is pinocytosis, which is called as the cell drinking. And the difference is, here the cell engulfs the foreign particle or the solid material, and here the cell membrane invaginates inside and the droplets are brought inside. Okay, and the vacuole which is formed here is called as the endosome. The vacuole which is formed after the process of phagocytosis is called as phagosome, and the vacuole which is formed after the process of pinocytosis is called as endosome. Okay, and the third type of endocytosis is receptor mediated endocytosis. Receptor mediated endocytosis. And this receptor mediated endocytosis is, as the name indicates, जब इस सेल मेम्ब्रेन में के अंदर जो है रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और उस रिसेप्टर की हेल्प से जो है बाहर से इन चीजों को अंदर लाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. ओके, एंड जब रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है उसके बाद भी वैक्यूल जो फॉर्म होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोसोम. Fine. So phagosome and endosome. Fine. Now, once this bacteria or these food particles come inside, they need to be degraded. अब हमें इनको क्या करना है? We have to digest them. We have to degrade. So now these materials which are brought inside in the form of phagosome or endosome, they come in contact with the lysosomes. Here is lysosome and here is lysosome. Okay, and these lysosomes जो है, they contain the enzymes inside. And remember the two types of lysosomes, the primary lysosome and the secondary lysosome. Okay, once these phagosome and endosome, they come in contact with this primary lysosome because still the enzymes are not active. Okay, the enzymes are not active, they are not in the position to degrade something, they are not in the position to digest something. Fine, and they become active when this phagosome comes and fuses with this primary lysosome. और दिस एंडोसोम जो है ये जब आता है और इस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ अटैच होता है, तभी जो है ये प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्म करता है सेकेंडरी लाइसोसोम. ओके, कैसे फॉर्म होता है सेकेंडरी लाइसोसोम? जैसे ही ये फैगोसोम या एंडोसोम इस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ अटैच होता है, तो इस प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर जो है पीएच चेंज होता है. Okay, the pH decreases and the medium inside becomes more acidic. Fine. और जो है this lysosome की जो membrane होती है, it has the protein pumps. Okay, protein pumps जो है, once this phagosome and this endosome come in contact with this lysosome, तो ये protein pumps से जो है more hydrogen ions are coming inside. Hydrogen ions. Okay, and the more number of hydrogen ions coming inside, the less will be the pH. Okay, that means it will be more acidic. Simply जो है this phagosome and endosome जब ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो प्राइमरी लाइसोसोम का जो पीएच है वो चेंज हो जाता है, पीएच डिक्रीजेस एंड इट बिकम्स मोर एसिडिक. और जब ये मोर एसिडिक बन जाता है तो ये जो है इसके अंदर जो एंजाइम्स है वो एक्टिव हो जाते हैं और इस फैगोसोम को या इस एंडोसोम को वो डिग्रेड करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं. ओके, एंड दीज लाइसोसोम एंड जो है
this primary lysosome and this phagosome, or this primary lysosome and this endosome, when these combine together, they form the secondary lysosome. Okay, this is the secondary lysosome. फाइन. और सेकेंडरी लाइसोसोम में जो है द एंजाइम्स आर एक्टिव नाउ, और वो एक्टिव कैसे है? वो एक्टिव इस वजह से हो गए, जब फैगोसोम और एंडोसोम इसके कांटेक्ट में आ गए तो देयर विल बी डेफिनेटली सम चेंज, और चेंज की वजह से जो है द medium inside becomes more acidic and the enzymes becomes active, and they start degradation of this bacteria or this phagosome and the degradation of these endosome. Okay, so the first function, and this process is called as heterophagy. Heterophagy में जो है the lysosome has digested something which has been brought from outside the cell. Okay, we have seen the two mechanisms of actions. One is autophagy and then there is heterophagy. And heterophagy में for example bacteria, food particles जो है वो सेल के अंदर लाए जाते हैं in the form of this phagosome and endosome. Phagosome and endosome comes in contact with primary lysosome, and then this primary lysosome becomes active, or the enzymes inside the primary lysosome becomes active, and they start degradation of these macromolecules. Okay, then there is second function. सेकेंड स्पेसिफिक फंक्शन, ये किस चीज को और डिग्रेड करता है? दैट इज डिग्रेडेशन ऑफ worn out cell organelles. Okay, worn out cell organelles. If you remember the function of the rough endoplasmic reticulum की जो function है, that helps in the degradation of worn out cell organelles. Okay, और वहां पे मैंने आपको कहा था, for example, this is one cell. Here is nucleus, for example, and here is endoplasmic reticulum. Okay, and this endoplasmic reticulum क्या करता है? For example, here is the mitochondria. Okay, और ये mitochondria, it has become exhausted, it has become tired और functionless. अब ये जो है function perform नहीं कर पाता है, तो इस mitochondria की इस सेल के अंदर कोई जरूरत नहीं है, तो इस mitochondria को हमें degrade करना है, इस mitochondria को हमें ब्रेक डाउन करना है. तो उसके लिए जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करता है? इट रैप्स इटसेल्फ अराउंड दिस माइटोकॉन्ड्रिया और अराउंड दिस वर्न आउट सेल ऑर्गेनेली. ओके, और जैसे ही इसके अराउंड जो है ये खुद को रैप करता है, जैसे हमने यहां पे देखा था सेल मेम्ब्रेन जो है ये अराउंड बैक्टीरिया खुद को रैप करता है during the process of phagocytosis. तो यहाँ पे वैसे ही जो ये endoplasmic reticulum है, it wraps itself around this worn out cell organelle, around this mitochondria, and then this section जो है ये इस endoplasmic reticulum से cut off होता है, and it becomes a structure which is called as autophagosome. Autophagosome. Why it is called as autophagosome? Phagosome में हमने देखा था कि wrapping जो है around the macromolecule होता है, but the macromolecule is coming from outside. So that is called as phagosome. But here the thing which जो है which has been wrapped by this endoplasmic reticulum खुद को जो है इस माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी लपेट में लेता है और अपनी लपेट में लेता है, and the mitochondria is present inside the cell, and that is why it is called as the structure here which is formed is called as autophagosome.
Auto means self, it is present inside the cell. Okay, and this autophagosome जो है, which has the worn out cell organelle, for example mitochondria, this autophagosome again come in contact with the primary lysosome. अगेन दी प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं और वो एंजाइम्स एक्टिव होने के बाद इस माइटोकॉन्ड्रिया का या सेल ऑर्गेनेली का डिग्रेडेशन करते हैं, इसका ब्रेक डाउन करते हैं. Fine. So we have seen two specific functions of very important functions of lysosomes. We have seen the first one, the degradation of macromolecules by the process of phagocytosis, by the process of pinocytosis, by the process of receptor mediated जो है endocytosis. चीजों को बाहर से अंदर लाया जाता है और वहां पे जो है दे बिकम phagosome और endosome. They come in contact with the primary lysosome. Primary lysosome becomes activated or the enzymes become activated and those macromolecules are digested. And the second specific function is degradation of worn out cell organelles. जो हमने पहले ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये उन ऑर्गेनेलीज को अपनी लपेट में लेता है जो सेल ऑर्गेनेलीज अब फंक्शन नहीं कर पाते हैं और उन ऑर्गेनेलीज को जब ये अपनी लपेट में लेता है तो ये फिर इससे जो है अलग होता है एंड दे फॉर्म ए स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज ऑटोफैगोसोम. अगेन दिस ऑटोफैगोसोम कम इन कॉन्टैक्ट विद प्राइमरी लाइसोसोम. द एंजाइम्स बिकम एक्टिवेटेड बिकॉज द pH becomes less and the medium becomes more acidic and the activated enzymes then start the degradation of this worn out cell organelle. So thank you very much. I hope today's class was helpful for you. If you have any suggestion, all your suggestions are most welcome in the comment section to make these classes better and better. Thank you.